का तो नहीं वेट कर। हेलो। Still waiting. Assalamu alaikum everyone. I am Amina Abbas. I am currently a school-based career counselor and I am an alumna of the Global U-Grad program. Carrying forward the theme of Women's History Month, we have with us a panel of three fantastic ladies who are striving for the top in their chosen fields of work. And interestingly, they have chosen fields which are predominantly assumed to be very male-oriented stereotypically, but they're doing wonderfully in them. So we're going to be having a small conversation with them about that. We have with us Fatma Salim, who is a sports journalist currently working at Geo, and she's an alumna of the Sports Exchange Program. We have with us Nimra Rafiq, who is a musician. She has had multiple performances on national television, and she has contributed to quite a few Coke Studio seasons as well. She's an alumna of the Center Stage program, and we have with us Sheila Qureshi, who is an alumna of the International Visitors Leadership Program, and she is a policewoman and currently serving as a superintendent in Karachi. At the end of the discussion, we are going to be joined by the Assistant Cultural Affairs Officer for the U.S. Consul General, Mr. Keeman Rowe. Until then, I would want the panelists to tell a little bit about themselves, and then we'll move on to a more specific questions. Fatma, would you like to tell a little bit? I think Fatma's mic is muted. Hi, can you hear me now? Wow, I was going on with my life story when nobody was listening. So yes, I'm a sports journalist. I've been working for Geo for the past 15 years. And, you know, it's every day is just a new challenge and work. And besides that, I'm also a founder of Google Pakistan, which is an NGO. And basically we teach young girls how to play sport, any sport they like, for free by qualified coaches. So that's something that I'm really proud of. And of course, whenever discussion goes on, we'll tell you more about myself. Thank you, Fatma. Nimra, would you want to move on? Hi everyone, this is Nimra Rafiq. I've been in music field for over 15 years now. I've been working with Sounds of Karachi. Again, an alumni of Center Stage. I've toured to the USA for this exchange program called Center Stage, or with Sounds of Karachi, of course. I'm a lead vocalist in Sounds of Karachi. Also, I'm working on my solo album. I've released 2 of my songs as well. I'm a composer, songwriter, and I've been a part of Coke Studio since 6 years now as a backing vocalist and a lead vocalist as well. I've done multiple OSTs, and right now I'm working on this project. Sounds of Karachi का ही project है जो album है, और उसमें हम different vocalist को utilize कर रहे हैं, उन्हें train कर रहे हैं, female vocalist, male vocalist जितने भी हैं, जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स काउंसिल्स के स्टूडेंट्स हैं, नापा के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनको हम जो है लाइव परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं. Thank you, Nimra. Sheila, are you there, or would you want us to circle back in a bit? Okay, Sheila there. Sheila is actually in the middle of a couple of things going on, so we're going to have to keep checking in with her. Yes.
Question क्या था? Shella, could you Please tell can a you little repeat bit that? about yourself? I was saying, Okay, could you this is tell a Shella little bit Qureshi. about yourself? This is Shella Qureshi in front of you, and I've been currently serving as District Head of Investigation in Central. And before this, I was lecturer at DGSM Government Science College. I taught there for 3 years, and later on, I switched my career as Assistant Commissioner Sindh province में. Then CSS 2010 में किया, और फिर first ever ASP in the history of Karachi जो है वो appoint हुई. और since then, I've been serving in police in operational field. Right now I am a detective. और पहले खवातीन के बारे में समझा जाता था शायद पुलिस के अंदर नहीं आ सकती हैं, या वो आएंगी तो काम नहीं करेगी, लेकिन अब ये चीज खत्म हो चुकी है. एंड वी हैव टेकन सो मेनी इनिशिएटिव्स खवातीन को मोटिवेट करने के लिए. पहले 200-250 लड़कियां पुलिस के अंदर रिक्रूट होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 3000 तक पहुंच चुकी है वो फिगर, by conducting volunteer seminars, school, college, universities. So it's a great change. और मैं अप्रिशिएट करती हूँ वुमेन को, एंड दे शुड स्ट्राइव एंड जॉइन पुलिस. ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग फील्ड, एंड इंडीड जब मेरी फर्स्ट असाइनमेंट मुझे दी जा रही थी तो कहा गया था कि जी बीइंग वुमेन शी विल नॉट सर्व, ऑफिस में आएगी नहीं, बैठेगी 9 to 5 नौकरी, और ये ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है. सो इट वाज एक्सपेक्टेड लाइक दैट, एंड आई नेवर एवर सॉ क्लॉक इन माय ऑफिस कि किस वक्त क्या टाइम हो रहा है. रात के 2-2:30 बजे तक भी मैं ऑफिस में बैठी होती थी, रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं, टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, सुबह से पेट्रोलिंग, वीवीआईपी मूवमेंट, एवरीथिंग in the operational field, whatever the job is required job की जो भी डिमांड्स थी वो मीट की. तो कोई ऐसा काम नहीं था कि जो मैंने कभी इनकार किया हो, या कहीं दफ्तर में बैठ के वायरलेस पे काम चलाया हो. इस तरह से एक्सपेक्टेशंस लोग की होती हैं कि जी खातून है नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. सो वी डिड इट एंड प्रूव्ड इट. लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा माइल जाना होता है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट अप करनी पड़ती हैं खुद को मनवाने के लिए. और आई थिंक चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, you have to work very hard with dedication, commitment and zeal. तो अगर आपके अंदर विल पावर हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल. वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में जब आया था तो उससे पहले women were not supposed to join police service of Pakistan via CSS. So after that women have been enrolled in more than 60 ASPs all over Pakistan. जो है वो अब तक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं, and they are working well at different nook and corner of the country on different assignments and working well. So 700 की जो पॉपुलेशन है पीएसपी ऑफिसर्स की अक्रॉस पाकिस्तान, उसमें 59 और 60 के करीब लेडी जो ऑफिसर्स हैं वो अब आ चुकी हैं. और मैं समझती हूँ बड़ा चेंज आया है, और इसी तरह से कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस रहा. तो मैं ये देख रही हूँ पिछले 10 साल से कि खवातीन जो है वो पुलिस के अंदर फर्स्ट चॉइस पे आ रही हैं. प्लस ये कि पहले हर ग्रुप में 1 या 2 होती थी, और अब माशाल्लाह 5 से 8 लड़कियां विद इन अ सिंगल बैच, जिसमें 18 का बैच होता है, और 5 से 8 लड़कियां होती हैं फर्स्ट चॉइस पर. तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और एक बड़ा चेंज है, जो कि ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग वाली बात है, और दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. बट द सर्कमस्टांसेस, द एनवायरनमेंट इज क्वाइट चैलेंजिंग. उसको फाइट करने के लिए अभी भी मजीद एफर्ट्स करने की जरूरत है. और खवातीन जो है वो किसी लिहाज से भी कम नहीं है, वो पूरी कोशिश करती हैं अपने तौर पे काम करने की, और डेडिकेशन के साथ. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. अगर हम यूरोप और अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखते हैं, वी हैड मेनी सेशंस एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स ओवर देयर. तो उसमें हमने वहाँ की जो खवातीन उनसे भी ये लर्न किया. दे वर गिवन ओनली दी पेट्रोलिंग असाइनमेंट्स, डेस्क असाइनमेंट, जहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग नहीं थी. तो मेन स्ट्रीम से उनको की असाइनमेंट से दूर रखा जाता था. एंड जो मर्द होते थे, मेल ऑफिसर्स, उनको जो है वो चूजन होते थे, उनको वहाँ पोस्ट किया जाता था. लेकिन बाद में अगर हम देखें तो क्वाइट ग्रेजुअल चेंज आया, और खवातीन को भी की पोजीशंस दी जाने लगी. सो दिस इज नॉट द केस ऑफ पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्री. इट्स एवरीवेयर इन द कंट्री. वुमेन आर डिप्राइव्ड, दे सीम्स टू बी अंडर प्रिविलेज्ड. उनको जो है वो मेन की पोजीशन से दूर रखा जाता था. लेकिन अब मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो ग्रेजुअली चेंज भी बहुत आया है. और अब खवातीन ने अपनी जो काम करके अपनी सलाहियतों को मनवाया भी है. So now they have been given the task. Okay, thank you so much, Shella. One of the a very interesting question is that any of you can start with the answer. How about Fatma? If you start, give your answer first. That did you always intend to go in this field of sports journalism, or did you just somehow stumble across it and figured out that this is your calling? Basically, I was doing LLB,
I was in my first year of LLB, and I decided, when I had my exams, I'm like, okay, this is not for me. I mean, I wanted to be a lawyer because I thought like I wanted to talk a lot, and I thought it was very, you think that whatever you see in the movies, that's exactly how your job is going to be like. But when it came to studying, I was like, okay, I don't think I can do this. And I had heard about this university in Lahore, where they were offering sports journalism, BA honors in journalism. And I said, okay, this is exactly what I want to do. I always wanted to either be not a sports girl, but I wanted to be a weather girl. There's something my mother tells me, like when I used to be young, I used to put a chart paper outside my room and just stand there and tell the weather. So they knew that I was going to be on TV somehow the other. And I did journalism. And just one fine day, we had a course where we had a guest speaker. He was a sports journalist. He came out of nowhere just to tell us about his job. And it just sounded amazing, like traveling the world, reporting. And I said, wow, if these men can do it, so can I. So I think as soon as I was done with the degree, I came to Karachi. I joined Dawn as an internee. And then, it's been 16, 17 years, no looking back after that. Yeah. Nimra, what about you? Was this always your calling, or you sort of got here somehow? Well, बहुत मजे की बात ये है कि I really didn't want to sing. When I was in school, my teachers used to push me to participate in naat competitions and national song competitions. और मैं first भी आती थी, of course. I was the best singer in the school क्योंकि बहुत कम ऐसे students होते हैं जो सुर में गा रहे होते हैं, और but मुझे शौक नहीं था. But my teacher pushed me to this reality show in 2007. Or when I got eliminated from that show, that was the point. I was like, if my teacher thinks I'm good, then why I'm not selected? Why am I eliminated? That's when I started singing. Otherwise, my father wanted me to be an air hostess, but from that moment, I actually knew that this is the one thing I'm born to do. What about you, Shaila? I understand you have had some experience working in the education field, and then wahan se yahan switch aaya. Well, as far as my career or destination is concerned, तो बचपन से मुझे दादा शैला थानेदार बोलते थे. तो आई डोंट नो वो अब वो थानेदार तो नहीं बनी, एसएसपी बन गई. तो ये चीज होती है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, वो पहले डिटेक्ट हो जाती है. पेरेंट्स को आइडिया हो जाता है कि ये इंजीनियर बनना है, इसने डॉक्टर की तरफ माइंडसेट है, या फौज में जाना है. तो जो एक वे होता है बच्चे का बिहेविंग, या बचपन से उसका एटीट्यूड पता चल रहा होता है. तो पेरेंट्स, मेरे दादा ने फिर उसके बाद ये हुआ कि करियर में सिंपल मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल साइंस. डॉक्टर बनने का ख्वाब था, तो फिर सोचा कि डॉक्टर बन जाया जाए. लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि नहीं बन सकी. तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया एमएससी ज़ूलॉजी, और उसमें मैंने केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे. तो फिर मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ज़ूलॉजी. सोचा आप कुछ करना है, कुछ और करके दिखाना है. तो फिर मीनवाइल कमीशन के एग्जाम्स आए, तो मैंने स्टूडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया. तो मैंने पोजीशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर अपॉइंट हुई, और डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में मुझे मौका मिला पढ़ाने का. और मैंने 3 साल पढ़ाया. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस, डॉक्टर और बीबीएस हैं माशाल्लाह. और अभी इसके बाद फिर मैंने पीसीएस किया, प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम. उसमें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरे सेट में सेकंड पोजीशन ली, और अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई. फिर सीएसएस किया, तो करियर आपका खुद ब खुद बनता चला गया. मतलब मेहनत की, काविश की, तरह से चीज रास्ते बनते चले गए. जब यहाँ पर आए तो ऑप्शन मिला कि असिस्टेंट कमिश्नरशिप रेवेन्यू में काम किया जाए या पुलिस में. तो आई ऑप्टेड फॉर पुलिस बिकॉज आई हैड अ पैशन फॉर यूनिफॉर्म सर्विस. So because and majority of my seniors mentor, they also guided me कि पुलिस में आप पहली खातून होंगी, और it would be the wonderful opportunity for you to serve the marginalized community or victims of women. तो ये एक चीज थी मेरे अंदर, और वो मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक ले आई. और आज भी हम काम कर रहे हैं, वुमेन को भी सपोर्ट करते हैं. मार्जिनलाइज जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिवली सेंटिमेंटल हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं, सेंसिटाइज्ड भी हैं. और पूरी कोशिश करते हैं तमाम जो
लेजिस्लेशंस इनेक्टेड हुई हैं, ये तमाम वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और जीबीवी अपने जूनियर कोलीग्स के साथ उनको भी सेंसिटाइज करते हैं, ट्रेन भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा चेंज आया है। और जहाँ जहाँ वुमेन प्रोटेक्शन डेस्क हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस पर काम हो रहा है। स्पेशली अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध प्रोविंस ने इसमें लीड ली है, और जितनी भी जीबीवी और वुमेन एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस के जो कवानीन है वो सिंध के अंदर सबसे पहले पास हुए हैं। ना सिर्फ इनेक्टमेंट हुई है बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म भी डेवलप करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वर्दी आईजीपी सिंध की डायरेक्टर्स पे पूरे सिंध के अंदर 41 डेस्क बनाई है हमने, और उसमें जो वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं जिसको हम वुमेन पुलिस स्टेशन कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा लेकर आई थी वुमेन पुलिस स्टेशन का, अभी हमने उसको वुमेन प्रोटेक्शन सेल कहते हैं, WPC, और ये पूरे सिंध में 11 है, 11 पुलिस स्टेशन। और ना सिर्फ ये बल्कि DPO लेवल पे, जिससे हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर या ग्रेड 19 के ऑफिसर होते हैं, SSP साहब, उनके ऑफिस के अंदर हमने बहुत सारे वुमेन थाने बनाना, तो हमारे इतनी ज्यादा ना रिसोर्सेज है ना हम बना सकते हैं फिलवा, तो हमने इसका जो फौरी तौर पे इमीडिएट रेमेडी निकाली वो ये कि जो WPC सेंटर्स हैं उसके अलावा डेस्क हर DPO के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में और जोनल लेवल पे DIG ऑफिस में एक वुमेन प्रोटेक्शन डेस्क होगा, वहाँ लेडी पुलिस तैनात होगी, और जितने भी खवातीन से रेलिवेंट इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, GBV और अदर एंटी ट्रैफिकिंग, बच्चों के, खवातीन के, मर्द हजरात के भी मसाइल हैं, वो सारे उन डेस्क पे डील किए जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि GBV की कोर्ट भी हमने डेजिग्नेटेड बनाई है। तो मैं समझती हूँ कि इससे खुशाइन चीज है, जो चीज मेरा ख्वाब था कि कम्युनिटी की सर्विस की जाए, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आके मुझे पूरा पूरा एक्सेल करने का मौका मिल रहा है, और मैं अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एफर्ट्स कर रही हूँ। तो मेरे लिए बड़ी एक सेटिस्फेक्शन है। लोग मुझसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि भाई पुलिस से आप थक नहीं जाती, आप इतना टायरिंग इन्वायरमेंट है, तो मैं इसको इबादत समझ के करती हूँ, और मुझे बहुत मजा आता है इस तरह से हेल्प करने में लोगों की। Thank you, Shaila. Acha, one of the things that Shaila mentioned in her introduction was that she did feel that she had to put in an extra effort to make her place within the police force. But what about you, Nimra? Within your industry, do you feel you had to put in an extra effort? Yeah, was it a smooth trajectory from there? I remember the time I started singing when I tried to be a part of this field back in 2007, 2008. चीजें बहुत मुश्किल थी. Everything was really hard to do. हालांकि इतनी सिंगर्स नहीं है फीमेल वोकलिस्ट की अगर बात करें तो बहुत कम फीमेल वोकलिस्ट है जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं. I had to go through a lot of threats, a lot of challenges. नहीं था आसान बिल्कुल भी, और एक टाइम पे आके I gave up. I was like, nahi, I'll do something else. Maybe there's something else for me. What kind of hurdles, if you could sort of elaborate on that? I used to live, I normally don't talk about it, but I think I should talk about this. I used to live in a town of Karachi called Korangi. मेरे फादर का अपना घर था वहां पर. My family, when my family migrated from Bombay, they all lived there all of their lives. I remember कि मुझे लोग shows नहीं देते थे इसलिए क्योंकि I used to live in Korangi. लोग मुझसे बात इस तरीके से करते थे. I still remember all of those people जो आज मुझे literally मेरे मैनेजर को कॉल्स कर करके मेरा टाइम मांग रहे होते हैं फॉर शोज. दे ऑल वर लाइक कि हाँ ये कोरंगी से आई है लड़की, तो कोरंगी की मतलब एक इमेज बना दिया जैसे आज लियारी का इमेज बना दिया है. तो शुक्र है कि हर जगह से कोने कोने से नए नए टैलेंट्स निकल के आ रहे हैं. तो इट डजंट मैटर वेयर यू लिव, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग ये कहते हैं कि हाँ कोरंगी से आई है तो जाहिली होगी, या अगर लियारी से. This was discrimination based on geography. This had nothing to do with this being a very male dominant industry. उससे इसका कोई वो. Okay, ठीक है. What about you, Fatma? Quick comment on Nimra Rafiq. जी चलो. बेसिकली देखिए, कमाल किसी जगह में नहीं होता, किसी ग्राउंड में नहीं होता. लियारी के बेस्ट ग्राउंड के अंदर से वर्ल्ड का इंटरनेशनल प्लेयर फुटबॉल का बेस्ट निकल सकता है. तो कॉलेज के अंदर कदीर खान जैसी हस्ती निकल सकती है, वहां से पैदा हो सकते हैं. तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन. वो जगह का कमाल नहीं है, टैलेंट या पोटेंशियल बंदे के अंदर होता है, और उसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको जरूर पॉलिश करता है.
और अल्लाह ताला ने हर शख्स में खुदादार सलाहियतें रखी होती हैं, तो हेड्स ऑफ टू निम्रा, दैट्स ग्रेट। कभी भी किसी के सामने ये चीज देखें, आपको अपनी बर्थ प्लेस चूज करने का हक नहीं होता, आपको अपने पेरेंट्स चूज करने का हक नहीं होता। तो जो चीजें गिफ्टेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, तो उसको हमें कभी भी उसके ऊपर पशेमानी नहीं होनी चाहिए, या हमें रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं लियारी में क्यों पैदा हो गई, या मैं फला जगह पे। आई टेक Of प्रिविलेज, course. मैंने जो स्कूल से पढ़ा है, और लाइट भी नहीं होती थी, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ा है, लाइक इस एनवायरनमेंट से। वी आर नॉट द किंडरगार्टन और कराची ग्रामरियन। तो आपके अपने अंदर पोटेंशियल और टैलेंट होना चाहिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Padma, what about you? Did you feel like you had to make an extra effort? ऑफ कोर्स देखिए स्पोर्ट्स का जो फील्ड है वो है ही डोमिनेटेड बाय मेन। सबसे ज्यादा मेल जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स में। जब मैंने 15 साल पहले शुरू किया था तो कोई लड़की इतना ज्यादा नहीं कर रही थी। मुझसे पहले एक दो थी जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी। नो वन वाज टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स और रिपोर्टिंग ऑन स्पोर्ट्स। तो बड़ा मुश्किल होता है ये जो बैरियर है ना, और तो मर्द के बीच में इसको तोड़ना, पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, सही तरह उर्दू नहीं बोल रही, सही तरह इंग्लिश नहीं बोल रही, सही तरह इसको क्या पता मैच के क्रिकेट के बारे में। तो या देयर वाज सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, और मुझे उसके लिए ये करना पड़ा कि मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी, अपना होमवर्क दिन रात एक करके। यू नो, इफ देयर इज अ क्रिकेट मैच आई वुड रीड अबाउट एवरीथिंग, आई वुड वॉच एवरी बॉल, बिकॉज आई हैड टू प्रूव दैट आई एम नॉट डम। जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल आई एम नॉट डम। अच्छा, फिर लोग आपको ये भी शुरू में कहते थे कि आप जो है सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ, तो वो जो है he will ask all the tough questions and Fatma can just take the break. तो जब हम कोई शो रिकॉर्ड कर रहे होते थे तो वो कहता आप सिर्फ ब्रेक लेना। तो मैंने बोला मैं तो ब्रेक लेने नहीं आई यहाँ सिर्फ कि अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। आई एम हियर टू आस्क क्वेश्चंस, and if and that's why I started doing my homework day and night, and I prepared my own questions, क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं करता है कि आपको स्क्रिप्ट रेडी कर दी आपने आके पढ़नी है। मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है, आज 16 साल हो गए मैं प्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ती हूँ। आई डू माई ओन होमवर्क, आई टेक इट विद मी, एंड मैं जाके क्वेश्चन रखती थी उस सामने। बाद साथ वाले को होस्ट वो यू नो माइंड भी कर गए हैं, पास्ट में नाराज भी हो जाते हैं कि ये लड़की क्यों आके सवाल पूछ रही है। बट क्या हुआ, आज मैं अपना खुद अकेला शो करती हूँ, and you know I don't need anybody there. So yeah, it was never easy. It's never easy for us women ever. What about when you would be speaking to the sports personalities? Would they be equally forthcoming with you as they would be with maybe male sports anchor persons, or Yeah, no? actually in the beginning it was, मैं नर्वस होती थी। अब आप यू नो पूरी लाइफ आप वसीम अकरम को, रमीज राजा को, शुएब अख्तर को टीवी पे देखते हैं, नेक्स्ट थिंग वो आपके साथ ऐसे गेस्ट बैठ जाए, तो ऑफ कोर्स दे वर नर्व्स। मगर नहीं, किसी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया कि यू नो कि बोला क्या बकवास कर रही है, ये क्या बोल रही है, नथिंग लाइक दैट। I think everyone had been amazing, except some sportsmen who had a problem with talking to a woman. Oh, okay. So yeah, there are some sportsmen who have problem talking to a woman. उसके लिए मुझे कुछ दूसरे कमरे में स्टूडियो में जाके सवाल पूछना होता था और वो दूसरे रूम में जवाब देते थे। So Oh, अच्छा. besides that, yeah, ये भी होता है। So you figured that out too. Yeah, I mean they have no choice. आपने टीवी पे आना है, you have to talk to somebody. अब फंस गया वो मेरे साथ, कुछ नहीं हो सकता। So yeah, you know, आपके मैनेजमेंट को भी इसका क्रेडिट जाता है, जो कहते हैं कि नहीं भाई यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशंस होते हैं, हम खातून के साथ एक स्टूडियो में नहीं बैठेंगे। सो यू नो आपका जो मैनेजमेंट है, दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले, दैट से नो भाई शी इज आवर anchor or she is our presenter for today, like it or not. So yeah, so I really have to give credit to Gio for always pushing me to be the front face of sports. Mm-hmm. So these are all external factors of how other people would perceive it or how other people would react to it, people in the industry. What about more internal factors within your own social circle? Did any of you face any kind of maybe reservations from your own circles कि ये क्या कर रही हो, सिंगिंग में जा रही हो, ये क्या कर रही हो, पुलिस में जा रही हो, स्पोर्ट्स में जा रही हो, this is not a place for you? इस किस्म की any किसी की reservations नहीं है? Did everybody have like full support? Shella, would you like to? Yes, nobody likes to be the part of police. हम सब बातें करते हैं, पुलिस ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। So I thought that हम अगर ये बातें करते रहेंगे कि पुलिस ठीक नहीं है, तो उसका हल क्या है? Be the part of that institution and bring the तो बजाय इसके कि हम उंगलियां उठाते रहे और बातें करते रहे कि सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमने उसको खुद ठीक करने का इरादा किया और आज आपके सामने बैठे हैं। तो कोशिश करते हैं अपने हिस्से की क्षमा दिलाएं। और जहां तक बात है रेजिस्टेंस की, ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ चेंज देयर मस्ट बी।
ये तब्दीली कायनात का मजहर है, लेकिन उस तब्दीली को आने के लिए आपको बड़े हर्डल्स और रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ता है. वो कहते हैं So ना, you did सोना have भट्टी में support. जैसे चोटें आती हैं उतना अच्छा निखर के सामने आता है. तो जब भी आप कोई अच्छा काम करने का आज़म करते हैं, इरादा करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ ग्रेट रेजिस्टेंस. व्हेन आई वाज लेक्चरर, तो मुझे भी कहा गया, सीनियर जो प्रिंसिपल वहाँ पे थे, लेक्चरर्स थे, उन्होंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर, मैडम इतना अच्छा प्रोफेशन नहीं है, 9 to 5 नौकरी करें, लेक्चरशिप में अच्छा है, आधे दिन से फैमिली को टाइम दो, आधा दिन मतलब एक ग्रेड 20 का अफसर जो है, तो वो ये कह रहा है कि पुलिस इज नॉट अ गुड प्रोफेशन फॉर यू टू डू. मतलब वुमेन के लिए इंकरेज ही नहीं किया जाता कि आप जाएं भी. तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ. लेकिन लोगों को एक जॉब मिल जाती है तो सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि जी चले हमें जॉब मिल गई है, नाउ डू इट, पर जो है बस इसी में गुजारा करते हैं. तो आई kept striving myself, और वहीं पे मैंने इत्तेफा नहीं किया, बिकॉज मुझे एक अंदर चेंज लाने की, एक अंदर स्पार्क होता है कि जी कुछ करना है, तो वो जो ठीक है. डेडिकेशन, कमिटमेंट, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है. एंड सेकेंडली द पार्ट ऑफ सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, तो लोग भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते. इवन आज भी अगर किसी के घर पे इलाके में कहीं पर पुलिस आती है तो सारे एकदम हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, जी वाई पुलिस, कॉप क्यों यहाँ पर. तो वो एक नेचुरल सा एनवायरनमेंट है जो पोस्ट कॉलोनियल से चल रहा है. पुलिस का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर, वी नीड टू चेंज दैट. और इसको हमने सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग पे बहुत काम भी कर रहे हैं, बिहेवियरल चेंज पे भी Of काम course. कर रहे हैं, और काफी इसमें कामयाबी होगी. थैंक यू. Mimra, what about you? Did you face any surprised reactions, or was there complete My support? father, मेरी फैमिली में ये है कि everyone is very surreal. Like my father and my mother, basically मुझे Oh, उनकी तरफ से excellent. ये जो है गाना आया है. We are actually 4 sisters and 1 brother जो कि सबसे छोटा है. और हाँ, we all used to live in Saudi Arabia. और जब हम वापस आए हैं 2003 में पाकिस्तान, तो उसके बाद my father went back सऊदी अरब में. तो there are just 5 ladies और एक छोटा 2 साल का बच्चा. तो कि उस वक्त पे जब हम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमें शोज में जाना है, अब ऑब्वियसली शोज रात के होते हैं, अगर कोई वेडिंग इवेंट भी है तो वो 4-5 बजे खत्म होता है लाजमी. और हम जब इतनी रात को वापस आ रहे होते थे, जबकि अम्मी साथ जाती थी हमारे मेरे खानदान वालों ने भरपूर कोशिश की थी, प्रॉपर कोशिश की थी. अब्बू को वो जो है मैसेजेस, कॉल्स सऊदी अरब करते थे, वो सऊदी अरब में रहते थे, और उनको वो वहां पर बहुत कोशिश की कि आप, तुम्हारी तो बेटियां रात के 4 बजे आती हैं, 4-5 बजे आती है. ऑल्सो वी यूज्ड टू लिव इन कोरंगी एज वेल. तो वो बहुत मतलब शेडी एरियाज हैं कि मतलब आप Security अगर का वो concern होता था. सिक्योरिटी का इशू और वो सारी चीजों के बावजूद हम ये सब करते थे. तो बहुत टफ टाइम मेरे फैमिली वालों ने दिया, until unless I showed up in कोक स्टूडियो. वहां पे पूरी कहानी बदल गई थी. वहां पे बिल्कुल Everybody was your friend. oh my god निम्रा. तो या बट माय फादर, मैं ये कहूंगी कि मेरे अब्बा, ही वाज लाइक कि कोई कुछ भी कहता है, जो तुम लोगों को करना है वो तुम लोग करोगे. मतलब ही इज लाइक, इवन मेरी बहनों की शादी के वक्त पे भी ही वाजंट लाइक कि मैं जिससे बोलूंगा उससे शादी करोगे. ही वाज लाइक कि तुम जिससे बोलोगे तुम उससे शादी करोगे. तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, माय फादर, माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव, ऑल्दो माय relatives tried really hard to break us, but it didn't happen. I said just a quick word with Sheila because I think she's been called in for a meeting, so I think she's going to be heading out. Sheila, if you have any, Sheila, are you there? Achani, I think Sheila has had to leave. Fatma, what about you? When people found out that you're going into sports journalism? I was just thinking about that. Initially, क्या हुआ था कि I started with Geo English, which never went on air. It was a channel that was just functioning, but it was never live. You guys never got I to remember see that it. time. Yeah. So I remember I used to go there. We used to work like crazy hours, and some of my family members started saying that she's lying that she has a job at Geo, and she's just making it up, you know. And then exactly like how Nimra said, the day I went on air on Geo News, everything changed. So everybody started asking, can you give me a press card? Acha, did you meet, Shoaib Akhtar? Acha, and it just changes. When people see you successful, I mean, they will try to bring you down, but you're so up there that you can't hear them. But when you're struggling, these voices have such a bad impact on you. इतना
you pay heed to everything what everyone says. So I think everyone starts saying media ki job hai, media ki job hai, like as if it's some sin to work for a TV channel. Mhm. You know, अच्छा चलो ड्रामे तो नहीं कर रही. Why can't a woman who is working in dramas be respected as someone who's, you know, reading the news? We all in the same industry. So yeah, this image of being working in the media is not liked by everyone. My parents fully supported me, but I know that my father didn't say it, but he was always a bit iffy about it because his relatives would say media ki job hai, you know. I mean, now it's become very clean and nice, and people are very proud of their daughters who work in media. But 16, 17 years back, it wasn't. It was still like, you know, there was a big question mark on the job, you know, description. But yeah, I was fully supportive, so no complaints there. Okay, so a question which is usually reserved for women in such sort of discussions, and probably rightly so because it affects the women more than the men, is that what kind of a family structure do each of you come from? Do you think that has had an impact on being able to pursue what you wanted to the extent that you have? Fatma, would you want to sort of talk about that? By family structure, you mean like if I lived in a nuclear household or Exactly. joint? Is that what you mean? Yes, exactly. Yeah. So no, we did live independently with my father, my mother, and my three brothers. So no, I didn't live in a joint family system, but we were very open to relatives coming in, meeting, very well connected to a family, and I think that really shapes you when you keep your doors Mhm. open for other. Yeah, it does, and I feel like yes, that structure. When I saw my mother independently taking care of the house, my father going to work, my brothers there with me, तो वो आपको अंदर एक आता है कि यार I also want to do something like my brothers were working and doing. So yeah, it was a very career oriented house. My mother was a housewife, but she always pushed us to go and study and do something. Yeah. Nimra, what about you? हम रहे हैं जॉइंट फैमिली में बट फिर वी वर सेपरेटेड हम मेरी फैमिली माय 4 sisters 1 brother and mother father used to be in Saudi Arabia तो You mentioned that. yeah so we all were separated or but yeah again agree to Fatma that we always kept our doors open to meet कोई भी आए कोई भी कुछ करे we just हमें उससे फर्क नहीं पड़ता था हम मिलते थे सबसे चाहे जितना भी हमारे बारे में बात की जाए या हम लोगों को डिग्रेड किया जाए डीमोटिवेट किया जाए हम उसके बावजूद भी सबसे बहुत खुशी से मिलते थे बिकॉज दैट्स व्हाट माय मदर वांटेड कि अगला बंदा आपके साथ चाहे जितना रूड बिहेवियर कर रहा हो आपने उनसे अच्छे से मिलना है तो ये हमारा था बट हम बहुत सही वक्त पे आई थिंक अलग हो गए थे जॉइंट फैमिली से Shaila, whenever you're in a position to join back, let us know. We would love to have you as part of the conversation again. Okay. So Fatma, I believe you have 2 children, right? Yes, I do. I have 2 beautiful girls. Acha, mashallah. How old are they? 1 year. One is almost 1 years old. She's about 11 months, and the older one, she's 5. Acha, so what difference did you feel in working before kids, with 1 kid, and then with 2 kids? Because I do understand that it is a big transition. It is, you know, so after my first baby was born, I had the worst postpartum depression, and I didn't know about postpartum depression. Nobody told me about it. Every time I used to cry, my mother used to say, "Ke, you know, how can you cry when Allah has blessed you with such a healthy child?" And nobody knew my feelings, and I had to go back to work after 3 months, and I was just feeding the baby. It was very challenging for me because मुझे उधर ऑफिस में बैठे बैठे फीड आ जाती थी baby यहाँ होता था. I used to cry and miss the baby. It was a terrible transition. I mean, I used to say, how can I leave my child and go to work? You know, the baby needs me. And I just built in this guilt inside me. और मुझे लगता था कि I'm the worst mother ever कि अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के चलेगी. But you know, I had this amazing support, like my mother. She took care of the baby. But yeah, for like कुछ matches होते थे रात में, then going reporting that बच्चे को छोड़ के जाना, it was very very tough. And I feel like I never got out of that mom guilt.
But Geo was amazing with me. आपको जो working environment बहुत अच्छा होता है कि मेरे को वो बोलते थे बच्चा साथ लिया, so I used to bring the child with me, or Oh, achha, that's come wonderful. working hours. Yeah, they used to sometimes say that Fatma can go early. Let's not give her evening shifts. So they really accommodated me. But I feel like I missed out on a lot because I thought कि बच्चे की वजह से I should not take this up. तो कुछ ऐसे थे, मुझे आती थी offers to work from sports organizing committee या इधर उधर कई job offers आती थी. I didn't take them, and now I feel bad because I was like, when the child grows up, वो तो आपसे पूछेंगे कि what did you ever do for me? So might as well build up something and आप अपने लिए करो. And I did, and now I do things for myself because I know this will have a positive impact on my daughters. They know that their mom is a working mother, and I think they're proud of it. Like the older one, she's happy when I come on TV. She sees me, gives me feedback. So yeah, it's not easy. Mom guilt तो पूरी जिंदगी रहता है आपके अंदर. But yeah, like after 5 years, I've made peace with it. And सबसे बुरा होता है आपके बच्चा बीमार होता है and you leave him at home. I heard 103 temperature, fever, asking for mama, but mama has to go to work. I think that's the most toughest part. मैं रोती भी ऑफिस जाती थी आंसुओं के साथ, कि मेरे बच्चे का क्या होगा. And then फिर आप देखते हो अपने इर्द गिर्द आपके घर, हमारे घर पे जो हेल्प आती हैं, वो लोग भी अपने छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन छोड़ के आते हैं just to clean up other people's houses. They're like Nimra mentioned, air hostess अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के कितने महीने out होती हैं. So then I thought it's just not me. It's everywhere. All these amazing moms making the ultimate sacrifice for their kids. And I feel मैंने अपनी बेटी के लिए किया और किसी के लिए नहीं किया. Going to work and staying at work. क्योंकि बच्चों के बाद अक्सर औरतें भाग जाती हैं. ये हमारी reputation बन गई है. I also feel that after the second one, we also start having a better sort of filtering criteria कि कहाँ mom guilt आना चाहिए है और कहाँ पे we can sort of let go of it. That's so true. अच्छा, तो other than all of the things that we've discussed, is there any specific hurdle that any of you feel like you have had and you would wish कि maybe for somebody who wants to pursue a similar career to yours in the future, uske liye kuch ho sake, something that can be done to sort of sort it out? I'm sure Shaila has a story to tell on that. I think Shaila is a little occupied today. She has been having back-to-back meetings. Achha, so another thing that I would want to know is that if you could, let's say, go back in time, what is that one piece of advice that you would probably give to your younger self, or you wish that you would have gotten when you were younger, probably relevant to the field that you're in? Nimra, do you have anything that you think? Sorry, can you repeat the question? My phone was all hanged. Oh, acha. मैं पूछी थी कि if you could go back in time, what do you think would be that one piece of advice that if you'd gotten, so maybe things would have been a little easier for you? I would advise myself बहुत सारी चीजें because I don't know, एक advice तो मुझे नहीं समझ में आती कि मैं जाके छोटी निम्रा को बताऊंगी, but मैं उसको ये जरूर कहूंगी कि भैया बहुत मुश्किल है लेकिन हार नहीं माननी है, गिव अप करना ही नहीं है, सीन ऑन है, आगे जाके ना तुम्हारा 8 साल के बाद सीन ऑन है. And anything that you feel you might, Fatma, sorry to cut you. I would advise myself to believe in yourself. I can't believe that all these years I wasted thinking like I'm not good enough, and that was so ridiculous. Like I look back and say, what were you thinking, Fatma? I used to, when my boss used to say, you have to go cover this event, I used to back off because I was not sure about myself. I thought I'm going to mess it up. I'm not going to do it. So I think I spent 5-6 years, very important, precious years, doubting myself, because women they are in that environment that they're being told that you cannot dominate a male, like a field like being a sports journalist. People they are very critical. आप तो लड़की हो, आप तो लड़की हो, आप आर्ट्स और एंटरटेनमेंट पे चली जाओ ना, स्पोर्ट्स क्यों कर रहे हो? So then you start becoming unsure of yourself. So I had so much doubt about myself that it's ridiculous that I would want to go back and tell
chin up girl, it's okay if you mess up, you know, there will be someone to clean it up, or you clean it up yourself. But don't give up. Like exactly, like मैं exactly ये बोलती हूँ अपने आप को कि be sure of yourself. That's what matters. Shella, can you join us? Yeah, are you occupied? I think she's in a meeting. She can't talk. I think she's walking out to जी have मैं a walk. बाहर आ गई हूँ जी बताइए what was But the we're question actually can you just wrapping up the discussion. So I just wanted to know if there's maybe one piece of advice that you would want to give to your younger self. oh yes to myself हाँ, what do you think Okay. would have been that one piece of advice जो आपको बचपन में मिल जाती तो you think it would have been an easier transition for you? वेल अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो सारी एडवाइसेस जो पेरेंट्स ने की हैं उस पे एक्ट अपॉन किया है और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज कोई रह गई है मतलब पूरी कोशिश मैंने की है और जो पेरेंट्स ने जैसे जैसे गाइड किया और उसको फॉलो करते रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल पोजीशन पर है तो बाकी मेरा यूथ को मैसेज है कि एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको अनलीश करें और तमाम तर सलाहियतों को यूटिलाइज करते हुए जो बनना चाहते हैं जो करना चाहते हैं नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ लाइफ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं लेकिन हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं करते डेलिबरेटली या जो है वो सरकमस्टांसेस की वजह से तो कभी भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए वो करना चाहिए जो हम खुद चाहते हैं तो जब आप खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं यू हैव द इनर सेटिस्फैक्शन तो आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और अपनी बेस्ट जो आपके अंदर स्किल्स होती हैं जैसे हम एक्सेप्शनल स्किल कहते हैं आप उसको यूटिलाइज करते हुए बहुत कुछ दुनिया के अंदर नया काम कर सकते हैं सो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच आपने आज इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म को चूज किया हम सबको मौका दिया यहाँ पर बात करने का और मैं समझती हूँ कि आने वाली यूथ के लिए ये एक राह अमल होगा और इसको वो फॉलो कर सकते हैं एंड सक्सेस पे करियर के हवाले से अगर कहीं मेरी गाइडेंस की जरूरत हो सो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द यूथ उनको कहीं पे भी असिस्टेंस चाहिए करियर प्लानिंग के हवाले से आई कैन मेंटोर देम थैंक यू Thank you so much, ladies, for an extremely exciting conversation. It was indeed a pleasure to speak to such strong women who are striving hard and reaching the top of their careers. I'm hoping that the audience and the viewers also enjoyed it as much as we did. And maybe we were able to plant some seed of hope in a young girl's heart to keep persevering, to pursue her dreams despite any potential adversities. I would now like to sort of pass on the metaphorical stage to Mr. Keeman Pro, who is the Assistant Cultural Affairs Officer at the U.S. Consulate General in Karachi, and he would want to share some closing remarks about today's discussion. Mr. Ro, are you there? Hi. Here. Assalamu alaikum, everybody, and good afternoon for everybody that's joining this session. It's truly an honor to have the opportunity to talk with each of you all for today's Women's History Month through the platform of Puan. I would personally like to thank everybody that participated today. So Nimra Rafiq, Shala Qureshi, Fatima Salim, and Amina Abbas for taking the time and being a part of today's very important discussion. I was able to listen in, and each of your stories is truly inspirational, really, and really your journey to are today. Hopefully that will be catalyst for people in our audience to support. So each year, Women's History Month offers an opportunity for us to shine a light on women's extraordinary contributions through history, arts, culture, sports. You name it, it's a chance for us to reflect on the astounding efforts of females and U.S. exchange alumni like each of you who are leading the way in representing your respective fields. We are so proud of your decision to choose non-traditional careers to work and be a contributing member of your society. The theme this year for Women's History Month is breaking the bias. So that's the perfect theme for today's discussion on. Whether it's deliberate or unconscious bias makes it difficult for women to move ahead. And knowing that bias still exists
action has to be taken. It's unacceptable for any bias or discrimination to be held against women or anyone for that matter. And I'm honored to be a part of an esteemed doing a panel of just doing the closing remarks, but you are really leading the charge in challenging the discrimination and stereotypes day to day in each of your respective industries. As the United States honors the 75th anniversary of U.S.-Pakistan relations, we affirm our support for the advancement and achievement of Pakistani women. The full meaning, full participation of women's in arts, business, government, sciences, sports, journalism, all of the industries is essential to ensure the United States and Pakistan and any society for that matter reaches its full potential. The United States does believe that working together, we can improve women's equality in all sectors. We believe that empowering women is a strategic investment in the future, both for private citizens as well as for the global economy. It simply doesn't make sense for any country to ignore half of its workforce. In the end, please join me and let us all pledge to advocate for the future of women leaders and promote and nurture inclusive workplaces and encourage girls to pursue unconventional career paths. Thank you again, and I'll hand it back over to you. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, for everybody. concluding remarks. Yeah. Bye-bye. Thank you. Assalamu Thank you. alaikum. Thank you so much.